Welcome dear students. Today we are going to discuss the Chemistry Syllabus Intermediate Part 1. Syllabus is an important document that tells us what to study, how to study, and what not to study. This video is going to be very important if you are an inspiring student of Intermediate Part 1. In our today's video, we will break down our syllabus chapter by chapter and provide you with a clear understanding about the topics that are included or excluded. I will also share the details of the new chemistry textbook. In the end of the lecture, we will also discuss the grading scheme of the chemistry first year. So let's start. This is your new chemistry textbook. Student, and chemistry के साथ साथ KIPS publications आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है और गाइड करता है टू अंडरस्टैंड और टू ब्रेक डाउन द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इनटू द इजीएस्ट वे. सो स्टूडेंट, नाउ अब हम देखते हैं कि हमारी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर इंक्लूड है. सो स्टूडेंट, देयर आर 16 चैप्टर्स इन आवर न्यू केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक. सो द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर्स आर द चैप्टर नंबर 1, periodic table and periodic properties. Chapter number 2, atomic structure. Chapter number 3, chemical bonding. Chapter number 4, stoichiometry. Chapter number 5, states and phases of matter. Chapter number 6, chemical energetics. Chapter number 7, reaction kinetics. Chapter number 8, chemical equilibrium. Chapter number 9, acid-base chemistry. Chapter number 10, electrochemistry. Chapter number 11, hydrocarbons. And chapter number 12, nitrogen and sulfur. Chapter number 13, halogens. Chapter number 14, atmosphere. Chapter number 15, basic separation techniques. And chapter number 16, lab safety and practical skills. Student, these are the 16 chapters that are included in our new chemistry textbook. Now students, अब इन चैप्टर को one by one briefly describe करते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं. So student, chapter number 1, periodic table and periodic properties. So in periodic table and periodic properties, there are total 10 topics are included. So these topics start from 1.1, historical background, and ended at topic variation in oxidation number in oxides and chlorides. And exercise MCQs are 1 to 12, exercise short questions A to M, and exercise descriptive questions question number 3 to 6. ये तो एक एज अ होल चैप्टर का व्यू है. अब हम ये देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2025 एंड 26 कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मजीद अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और इनमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. सो स्टूडेंट, इन periodic table and periodic properties, the topic 1.1, historical background. 1.2, modern periodic table, some features and significance. 1.4, blocks in periodic table. 1.5, families in periodic table. And page number 2 and 3 and page number 4 and 5. These topics are not more our part of syllabus. So student, MCQs 1 and 2 and short questions C and G also excluded from our syllabus. सो स्टूडेंट, अब आपको चैप्टर नंबर 1 का क्लियर हो गया कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो याद करने हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने टाइम प्रोवाइड नहीं करना. इससे क्या होगा, आप इजीली अपने चैप्टर को कम टाइम में वाइंड अप कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ. एंड चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर द टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड आर 2.1, atomic number, proton number, and nucleon number, identity of an element. That is the first topic of chapter number 2. And ended at 2.10, electronic configuration and formation of semiconductors. Student, ये तो थे टॉपिक. अब हम चेक करते हैं कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. सो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज MCQs 1 to 12, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस A to I, एक्सरसाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 to 5. नाउ अब हम उन टॉपिक्स को देखते हैं जिनको हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. सो स्टूडेंट, इन चैप्टर नंबर 2, द टॉपिक 2.3.1, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एट पेज नंबर 24, 2.7, electronic configuration and the periodic table, page number 35, 2.8, electronic configuration of ions and free radicals,
2.9 electronic configuration and formation of semiconductors that start from page number 35 and ended at page number 39. So student, these topics are not more the part of the syllabus. And short question F, G and I and descriptive question number 5. So student, these questions are excluded from our syllabus. Student, MCQs complete आपने याद करने हैं. Now student, chapter number 3, chemical bonding. Student, in chemical bonding, first of all, कौन-कौन से टॉपिक्स है जो इंक्लूड है अभी तक हम देखते हैं. एज अ होल चैप्टर को चेक करते हैं. So student, in chapter number 3, that is starting from type of bonding and ended at 3.9 molecular orbital theory. And exercise questions are exercise MCQs 1 to 12, exercise short question A to P, exercise descriptive question number 3 to 7. This is your as a whole chapter view. Now student, अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से questions और कौन-कौन से topics हैं जिनको हमारे syllabus से delete कर दिया गया है. So student, topic 3.1 types of bonding, topic 3.2 electronegativity and types of bonding, 3.3 intermolecular forces, 3.4 bond energy and bond length, 3.5 a comparison among ion, covalent and metallic bond and intermolecular forces. So topic ये थे जिनको हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. अब हम पेज नंबर चेक करते हैं कौन-कौन से अब एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. पेज नंबर 44 to 51. Exercise MCQs that are excluded from our syllabus are 1, 2, 3, 7 and 12. These MCQs are not more the part of our syllabus. And short question 𝗍𝗪𝗀𝗀𝗀𝗀. These MCQs and short question are so exclude from our syllabus. तो स्टूडेंट, अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि हमने चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग को किस तरीके से और किन-किन टॉपिक पर टाइम वेस्ट नहीं करना. सो इस तरीके से आप जल्दी और कम एफर्ट अप्लाई करके चैप्टर नंबर 3 को याद कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 stoichiometry. So student, in stoichiometry, the topics are started from concept of mole and ended at 4.9 importance of stoichiometry in production and dose of the medicine. And MCQs are the exercise questions. So exercise MCQs 1 to 12, exercise short questions A to I, exercise descriptive question 3 and 4, exercise numerical problems question number 5 to 8. So student, this is your as a whole chapter view. अब हम देखते हैं जिन टॉपिक्स को हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है. So student, the topic 4.7 limiting and excess reactant, 4.9 importance of stoichiometry in production and dose of the medicine. So student, these topics are excluded from our syllabus and page number 81 to 85 and page number 87 are not more the part of our syllabus. Now MCQs page number 89 and short question जो है आपके पास जो MCQs हैं वो completely याद करने और short question पेज नंबर 89 पर जो मौजूद है that is G. MCQs कोई भी exclude नहीं है, ये चीज याद रखिएगा. अगर कोई MCQs exclude होते तो वो आपके पास इस कॉलम में मेंशन होते. अब MCQs का कोई कॉलम नहीं है, so that you start from the excluded topic. Short question जो है आपके पास वो G है at पेज नंबर 87. Descriptive questions है question number 3. Numerical problem है question number 6. These questions from the exercise of the chapter number 4 are excluded. Now chapter number 5, state and phases of matter. In chapter number 5, the topics are start from 5.1 properties of gases and ended at 5.13 liquid crystals. Exercise questions जो है, exercise MCQ सबसे पहले आ जाते हैं 1 to 11. Exercise short question A to M. Exercise descriptive questions question number 3 to 7. Exercise numerical question number 8 and 9. अब हम देखेंगे इस चैप्टर में से कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है जो मजीद हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. So student, chapter number 5 state and phases of matter. Topic 5.10 energetics of phase changes and 5.11 solid. Page number 104 to 105. So student, these topics are excluded from our syllabus. MCQs number 4, short question D and J, and numerical 8 and 9. All these questions from the exercise are excluded. Now, chapter number 6, chemical energetics. So student, in chemical energetics, the topics are 6.1 enthalpy change and ended at 6.12 free energy or Gibbs free energy.
And exercise questions are exercise MCQs 1 to 12, exercise short question A to I, exercise descriptive questions are 3 and 4, exercise numerical problem 5 to 10. So student, this is your as a whole chapter number 6. अब हम देखते हैं इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है. So student, topic 6.11 entropy, 6.12 the free energy change. Student, these topics are not more the part of our syllabus, and page number 129 to 136 are deleted from our syllabus. So MCQs number 4, 11 and 12, short question C and J, numerical number 9 and 10. So student, all these questions and topic and pages are deleted from our syllabus. Now chapter number 7. So student, in chapter number 7, reaction kinetics. Topics are Collision theory 7.1, 7.6 जो end हो रहा है जिस पर, that is reaction mechanism. Exercise के जो questions हैं, exercise MCQs 1 to 13, exercise short question A to P, exercise descriptive question number 3 to 6, and question number 4, exercise numerical problems, question number 6 to 8. ये तो था एक as a whole chapter view. अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जिनको हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है. सो स्टूडेंट, टॉपिक 7.5 डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, 7.6 रिएक्शंस मैकेनिज्म, and it starts from page number 154 to 158. These page and topics are excluded from our syllabus. MCQs 7, 8, 9 and 13. Short question 𝗤𝗫𝗀𝗀 Question number 4 and 6 from the descriptive questions, 7, 8 from the numericals. All these questions and topics and page are excluded from the chapter number 7. So student, confuse नहीं होना, ये जो टेबल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये टॉपिक्स, ये एमसीक्यूज और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए. नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8, chemical equilibrium. So student, in chemical equilibrium, the topics are 8.1 macroscopic event and microscopic event, and ended at 8.16 industrial application of chemical equilibrium. Exercise MCQ सबसे पहले आ जाते हैं 1 to 12, exercise short question A to J, exercise descriptive question number 3 to 9. So student, अब हम इन टॉपिक्स में देखते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस का मजीद हिस्सा नहीं है. So student, chapter number 8, chemical equilibrium, topics 8.3 relationship between macroscopic and microscopic events, 8.4 dynamic equilibrium between two physical states, and it start from page number 166 and ended at page number 167. और मजीद टॉपिक्स हैं 8.5 conditions for equilibrium, 8.9 relationship between various equilibrium constant, 8.16 industrial application of chemical equilibrium, that start from page number 172 and ended at page number 175, and start from 179 to page number 181. So student, these topics and page are excluded from our syllabus. Now exercise questions check करते हैं. Exercise MCQs हैं, MCQs number 2, 4 and 7, short question E, H and I, and descriptive question 8 and 9. And these questions of the exercise also deleted from our syllabus. So student, only focused on the selective topics, MCQs, short question and descriptive questions and numerical problems. Now, chapter number 9, acid-base chemistry. So student, in acid-base chemistry started from 9.1 Bronsted and Lowry concept and ended at 9.10 acid-base indicators. And exercise questions are exercise MCQs 1 to 11, exercise short question A to M, exercise descriptive questions, question number 3 to question number 7, exercise numerical problem, question number 8 to question number 10. So student, these topics and MCQs and short question as a whole syllabus, but few topics and MCQ short question and long question also excluded from this chapter. So the topics that are excluded are 9.1 Bronsted-Lowry concept, 9.2 Lewis concept of acid and bases, 9.9 salt hydrolysis, 9.10 acid base indicator, page number 186 to 188 and 200 to 204. These topics and page are excluded or deleted from our syllabus. Now MCQs, first MCQs 4th, 5th, 6th, 7 and 9. Short question C, D, E, K
and F are deleted from our syllabus, and descriptive question 3, 4 and 7. All these questions that are mentioned in the table, page and topics are deleted from our syllabus. So only focused on the included topics. So student, chapter number 10, electrochemistry. स्टूडेंट जब चैप्टर नंबर 10 की बात आती है, एक बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें से, तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को बहुत इजी बना दिया गया है. सो देखते हैं सबसे पहले. सो टॉपिक स्टार्टेड फ्रॉम 10.1 ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड redox reactions and ended at, so student, topic 10.22 Wechsler method, biological oxygen demand and dissolve oxygen. So student, 22 topics are included in this chapter, a very big unit of first year chemistry. So student, exercise questions की तरफ देखते हैं. Exercise MCQs 1 to 12, exercise short question A to K, and exercise descriptive question number 3 to question number 6, and exercise numerical problem question number 7 to 9. अब हम देखते हैं इस पूरे यूनिट में से कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है. So student, the topic 10.8 mass of a substance deposited during the electrolysis started from page number 16 to 16. 10.9 amount of the substance producing during the electrolysis. 10.10 Avogadro's constant by electrolytic method and ended at page number 219. Now the topic 10.16 application of electrode E naught values. So it starts from page number 224. Variation of E naught with ion concentration ended at page number 230. Now, जो further topics है 10.18 Nernst equation, 10.19 activity series of the metals, 10.20 feasibility of redox reaction from activity series of the reactions data, 10.22 Wechsler method of BOD and DO that are started from page number 231 and ended at page number 232. So student, these topics are excluded. MCQs first, second, and 8th, 9th, 10th, and 11th. Short questions G, H, I, and J. Descriptive question number 3 and 4. Numerical problem 7 and 9. So student, these topics, MCQs, short question, descriptive long questions, और numerical problems are excluded from our syllabus. तो स्टूडेंट, अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि चैप्टर नंबर 10 को आप इजीएस्ट वे में और कम टाइम में याद कर सकते हैं. Now student, chapter number 11, hydrocarbons. In hydrocarbons, the topic started from 11.1, aliphatic and aromatic hydrocarbons, ended at 11.11, organic redox reaction. Exercise questions are MCQs, first to 12, short question A to I, and descriptive questions, question number 3 to question number 6. Now, the topic that are excluded from our syllabus is 11.9 conjugate dienes, page number 257, 11.10 isomerism, 11.11 organic redox reactions, and ended at page number 261. These topics are deleted from our syllabus. MCQs number 1st and 10, short question A, F, G, H, and J and I. Question जो descriptive question है, question number 6. These questions, MCQs and pages are excluded from our syllabus. Now students, chapter number 12. Nitrogen and sulfur. So student, in nitrogen and sulfur, the topic start from reactivity of nitrogen and ended at sulfuric acid H2SO4. Exercise questions are MCQs first to 12, short questions A to P, descriptive long questions, question number 3 to question number 6. Now student, the topics that are excluded are 12.12 role of sulfur in organic synthesis and 12.13 sulfuric acid, and page number 275 to 280. MCQs 9, 10, 11 and 12, short question ILMNOP, and descriptive questions, question number 5 and 6. These questions and MCQs and pages and topics are excluded from our syllabus. So only focused on the included topics. Now student, chapter number 13, halogens. So student, in chapter number 13, the topics are 13.1 volatility of chlorine, bromine and iodine, and ended at 13.11 use of chlorine in water purification. Now student, exercise MCQs are 1 to 10 and exercise short question A to P, descriptive questions 3 to 6.
ये थे एज अ होल चैप्टर व्यू। अब हम देखेंगे इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। चैप्टर 13 हैलोजेंस, टॉपिक 13.6 relative thermal stabilities of hydrogen halide in terms of their bond strength. 13.7 relative reactivity of halide ion as reducing agent. 13.8 reactions of halide with aqueous silver ion followed by aqueous ammonia. 13.9 reactions of halide with concentrated sulfuric acid. 13.10 reactions of chlorine with cold and hot aqueous sodium hydroxide. Page number 288 to 293. So student, further topics are halogens, MCQs जो हैं आपके पास, MCQs number 2, 4, 5, 7, 9 and 10. Short question K, M and O. Short descriptive questions are question number 3 and 5. These topics, MCQs, short question and descriptive question are excluded from our syllabus. So only focus on the selective topics. Now student, chapter number 14. Atmosphere. So student, in atmosphere, the total topics are 14.1 layers of the atmosphere, ended at 14.16 economics, social and political issues. Exercise MCQs are 1 to 11, short questions are A to M, and descriptive questions question number 3 to question number 6. So student, अब इन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक है जिनको हमने याद नहीं करना? So student, atmosphere 14.8, air quality 14.9, air quality and human health 14.10, air pollution and health risk 14.11, methods and techniques to measure and monitor the air quality 14.12, experiment and data collection to test hypotheses about the air quality 14.13, analyze the data and interpret the air quality. Now student, 14.14, strategies to use to reduce the air pollution. 14.15, laws and regulation related to the atmosphere. 14.16, and economic, social and political issues. Page number 306 to 311. Now student, MCQs that are excluded are 3, 4, 8 and 9. And student, 11th MCQs are also excluded. Short question 𝗍𝗃𝗀𝗃𝗀. These MCQs and short question and descriptive question number 6 are excluded from our syllabus. Now student, chapter number 15, that is basic separation techniques. So student, in the chapter number 15, अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि चैप्टर नंबर 15 हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है. हमें अपना टाइम इस पर बिल्कुल भी लगाना नहीं है. हमने जस्ट फोकस करना है फर्स्ट 14 चैप्टर से. अब इसी तरीके से चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं. चैप्टर नंबर 16 लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल स्किल जो है, ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है. अब हमें चैप्टर नंबर 15 एंड 16 को एक्सक्लूड कर देना है. रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 14. मींस आपको यही याद रखना है कि आपकी केमिस्ट्री में 16 चैप्टर नहीं है, टोटल 14 चैप्टर्स है. तो आपको वो तमाम टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जिन टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, वो एक टेबुलर फॉर्म में एज अ होल पूरी टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है. सो स्टूडेंट, ये था सिलेबस. जब आप सिलेबस और कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद बात आ जाती है आपकी एग्जामिनेशन की. और एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें है केमिस्ट्री पेपर. अब आपका केमिस्ट्री पेपर कैसे डिजाइन होगा, उस केमिस्ट्री पेपर के मार्क्स कितने हैं? सो स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चंस अब हम ब्रेकआउट करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द पेयरिंग स्कीम एंड पेपर इंस्ट्रक्शंस. सो स्टूडेंट, our chemistry paper for grade 11 will consist of 85 marks. 17 marks for the objective type paper and 68 marks for the subjective type paper. And total timing of the paper will be 3 hours. 20 minutes for the first objective type and 2 hours and 40 minutes to solve the subjective type paper. Now part 1, objective. Question 1. 17 MCQs will be developed from 1 MCQs will be asked from chapter 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 and 14 each. Students, these are 11 chapters. So, in chapter से 11 MCQs को choose किया जाएगा. Then, 2 MCQs will be asked from chapter 1, 6 and 10. So, 6 MCQs will be choose from 1, 6 and 10. So, total MCQs are 17. Each MCQs carry 1 marks.
That's why the total marks of the MCQs are 70. Now, अब हम देखते हैं कि पैटर्न कैसा होगा। आपको सबसे पहले MCQs शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसको हम ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। अब पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर प्रोवाइड किया जाएगा उसके अगेंस्ट आपको 20 मार्क्स अलाउ होंगे। आपने 20 मिनट में उस पेपर को सॉल्व करना है। अब ऑब्जेक्टिव शीट पर जस्ट आपने अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करना है। इसके अलावा आपने कोई करेक्ट आंसर को मार्क नहीं करना, अदरवाइज वो चीटिंग कंसीडर होगी। अब ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आपको एक रिस्पॉन्स शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसको हम बबल शीट भी कहते हैं। अब बबल शीट पर अपना डेटा फिल करने के बाद वो डेटा में क्या क्या होगा, आपका नेम, रोल नंबर, कोड ऑफ द पेपर, ये सब चीजें फिल कर अब लाइक आपके पास MCQs नंबर है 1, उसकी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड किया और उसका करेक्ट आंसर है चार्ली। लाइक आपके पास अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा ये ऑप्शंस होंगे। अब उनमें से जो करेक्ट आंसर था वो था चार्ली। अब चार्ली को करेक्ट करके अब आपको उसको रिस्पॉन्ड कहां करना है, तो आपने बबल शीट में जो सीरियल नंबर 1 होगा, जो MCQs नंबर 1 के अगेंस्ट, अब आपने चार्ली ऑप्शन को सी वाले सर्कल को फिल कर देना। जैसे आप सी सर्कल को फिल करेंगे, इनको फिल इस तरीके से करना है कि आपने बाउंड्रीज को सर्कल की क्रॉस नहीं करना और एक से ज्यादा बबल्स भी फिल नहीं करने। सेकंड, आपकी इंक इस तरीके से फिल ना करें कि आपके नेबरिंग सर्कल्स को भी टच करें। इस तरीके से आपका MCQs रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसमें इंक रिमूवर यूज करने की कोई चॉइस नहीं होती। इसी तरीके से आप 17 MCQs को रिस्पॉन्स करेंगे उसकी बबल शीट पर। इसके अगेंस्ट आपको 17 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, पार्ट 2। अब पार्ट 2 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। अब जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस क्वेश्चन पेपर में 2 पोर्शंस होंगे। वन इज पार्ट 2 that is subjective type, consists of short questions, and short questions, question number 2, question number 3 and question number 4. Then part 3 that is consists of extensive or long questions that consist of question number 5, 6, 7, 8 and 9. Each long question carry 2 parts, A and B. So we will explain the part 2 subjective. One thing, here we have the chapter numbers like chapter 1, 2, 7, 8 and 13. इनके एक ग्रुप बना दिया जाएगा। अब हम देखते हैं इन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस की क्वांटिटी या नंबर्स कितने होंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। सो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13. देन ये जो शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, दीज आर 12. सो स्टूडेंट, इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 8. सो क्वेश्चन नंबर 2, here we have solved out the 8 out of 12 short questions and this part consists of 16 marks. Now the second question, that is question number 3. It is also consists of short question and the chapter include in question number 3 are chapter number 3, chapter number 5, 6, 9 and 11. And the number of short questions are 3 from chapter number 3, 2 from chapter number 5, 3 from chapter number 6, 2 from chapter number 9 and 2 from chapter number 11. So student, 12 short question इन chapter से पूछे जाएंगे. Then इन 12 में से आपने attempt करने हैं 8 short questions. So answer of 8 short questions out of 12 and the part consists 16 marks. And the last part of the short question, question number 4. Student, in which chapter 4, 10, 12 and 14 is included and the number of short questions are 2 from chapter number 4, 3 from chapter number 10, 2 from chapter number 12 and 2 from chapter number 14. So student, here we have 9 short questions in chapter question number 4. Question number 4 में total 9 short questions हैं जिनमें से हमने 6 को attempt करना है. So student, question number 4 answer 6 short question out of 9. So that's why this part consists of कितने मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स? 12 मार्क्स. तो टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो गए? तो आप बताएंगे 8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, 8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 and 6 from question number 4. We have to solve 22 short question and
we got the 44 marks. So total marks of the part 2 subjective type is 44 marks. So student, in part 3, जो पार्ट 3 सब्जेक्टिव टाइप का है, टोटल आपके पास चैप्टर्स कितने थे स्टूडेंट्स? 14. अब इनमें से चैप्टर्स के पेयर बना दिए जाएंगे और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है कि आपके पास ए और बी टाइप हो. अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, और इन दोनों पार्ट को आपने सेम क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करना होगा और इसके बदले में आपको 8 मार्क्स अलॉट करेंगे क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. नाउ स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 2 से पार्ट ए होगा और चैप्टर नंबर 5 से इसका पार्ट बी होगा. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा दैट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 दैट हैज पार्ट 1 एंड चैप्टर नंबर 7 दैट हैज पार्ट बी. चैप्टर नंबर 7 से जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8 एंड 9. So A part from the chapter number 8 and B part from the chapter number 9. Question number 8 is taken from the chapter number 11 and 14. 11 chapter से जो होगा वो part A होगा और 14 chapter से जो question पूछा जाएगा वो part B होगा. इसी तरीके से question number 9 जो है that is taken from the chapter number 12 and 13 and A part from the chapter number 12 and B part from the chapter number 13. So student, इस तरीके से आपका जो part 3 है subjective type का वो complete हो जाएगा. अब आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. इट कैरी ए एंड बी पार्ट, ईच क्वेश्चन कैरी ए एंड बी पार्ट. सो देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस व्हिच cumulatively form the 5 questions. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. सो स्टूडेंट, आंसर द 3 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 5. सो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे स्टूडेंट? 8 3 द 24. जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं, it carry A and B part and each have 4 marks. So they are total 8 marks from the first long question. इसी तरीके से सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इसी तरीके से थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आपके पास टोटल जो जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे 24 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे. अब आपने ये चीज का ख्याल रखना है, जब आप एक पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे लाइक क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसका ही ए पार्ट अटेम्प्ट करना है और इसी का ही बी पार्ट अटेम्प्ट करना है, देन आपको कंसिडर किया जाएगा आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट अटेम्प्ट किया है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आप अटेम्प्ट करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 का ए पार्ट और चैप्टर नंबर 9 का बी पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा. इसी तरीके से थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपको अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं करना कि आप ए का ए पार्ट और किसी और क्वेश्चन का बी पार्ट आप ज्वाइन करके ग्रुप करके आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो इसका मार्क्स आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे. सो स्टूडेंट, ये तो था आपका सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन. इसी तरीके से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो एक पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे जैसे उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने उन्हीं 12 में से ही 8 को अटेम्प्ट करना है. चाहे वो 12 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे 9 हो, आपको जो बेस्ट आते होंगे क्वेश्चंस आपने उनको सॉल्व आउट फर्स्ट करना है. और आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. एग्जामिनर को आपके क्वेश्चंस को फाइंड आउट नहीं करना चाहिए. अब वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर को देखे उसको पता हो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है या पार्ट बी है, इसी तरीके से उसको लॉन्ग क्वेश्चंस का आइडिया हो, तो वो प्रॉपरली आपने मेंशन करना है लाइक पार्ट 2 सब्जेक्टिव और इसी तरीके से पार्ट 3 सब्जेक्टिव. उसको क्लियर हो जाएगा कि जब ये पेपर सॉल्व करता है स्टूडेंट, तो उसमें ये वाला पोर्शन ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है और शॉर्ट क्वेश्चन के किस क्वेश्चन का है ये भी आइडिया और कौन सा पार्ट है ये चीज भी उसको क्लियर होनी चाहिए. इस तरीके से जब आप क्लियर एक पेपर प्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर आपको बेस्ट मार्क्स अलॉट करता है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट आज की इस वीडियो के बाद आपको सिलेबस केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक चेंज हुई है उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, कौन कौन से चैप्टर एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, एक्सरसाइज के कौन कौन से पार्ट्स हैं जैसे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिनको हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है. आफ्टर दैट हमारा पेपर डिजाइन कैसे होगा, पेपर के टोटल मार्क्स, उसके बाद टोटल मार्क्स की आगे फर्दर डिवीजन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम यूटिलाइज करना है, और इस पूरी वीडियो के बाद आई होप स्टूडेंट्स आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं. और ये वीडियो आपके लिए एक पाथवे है कि आप किस तरीके से अपनी इंटरमीडिएट पार्ट 1 केमिस्ट्री को ब्रेक डाउन कर सकते हैं.